We have with us our very respected collector Jabalpur. कोच जाओ मेरे Please से give a huge round of बैठ जाओ, applause for सब ले her. जाओ, सब ले जाओ. यहाँ पर हमारे उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड कलेक्टर जबलपुर हमारे साथ हैं और हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ है जबलपुर स्मार्ट सिटी श्रीमती निधि सिंह राठौर का हमारे साथ है हमारे और आज का ये जो कार्यक्रम हमने रखा हुआ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप सभी तक पहुंचना बहुत ही अति जरूरी था क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है अपना अपना एक नया स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है बहुत सी नई संभावनाएं हैं जो आप तक पहुंच सकती है सुनो, मेरे को बैकस्टेज मत करना जो नई संभावनाएं हैं उनको क्योंकि एक्सप्लोर कर मेरे सकते हैं लैपटॉप वो सारी जानकारी जो है कनेक्टेड आज के है. इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ठीक है. मिलेगी और साथ ही साथ में हमारे रिस्पेक्टेड सर की तरफ से आपको जो है हैंडआउट्स का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पॉलिसीज का तुमको सुनाई दे रहा है लेकिन स्क्रीन एक्चुअली जाएगी मेरे लैपटॉप से, जिस मेरे लैपटॉप से. जो हमारे पॉलिसी का now I request our respected CEO ma'am to please welcome our respected director. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री चंद्रकांत तिवारी सर को प्लीज हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ मैम का वेलकम करें प्लीज प्लीज एवरीवन प्लीज गिव अ huge round of applause. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रकांत तिवारी सर को प्लीज वेलकम जीएमडीआईसी मिली प्रोजेक्ट सर प्लीज गिव अ huge round of applause everyone. अब जो है हमारे रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर को सीईओ मैम को राजेश सर चंद्रकांत तिवारी सर प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा हम रिप्रेजेंटेटिव आमंत्रित करना चाहूंगा. आरती वर्मा अलग से दिख रहा है यार. तुम नीचे जाओ, नीचे जाओ. सॉरी हम जो भी कंट्रोल कर रहा होगा वो उसको हटा देंगे. ये दिखे और हमारे उसमें स्क्रीन नाम को वहाँ पे दिखाना. बैकस्टेज है. Please everyone, please give a huge round of applause. मेरे को मैसेज कर दो और चार्ज कर दो. दीप प्रज्वलन इसको सेट करना पड़ेगा बार-बार. Please everyone, please give a huge round of applause. अगर हमको यही स्क्रीन पे रखनी है और इस पे काम करना है तो हो जाएगा क्या? कर सकते हैं और उसके लिए 1 सेकंड के लिए उसको बंद करना पड़ेगा. आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टार्टअप्स को जो है आज हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी 2022 जो मध्य प्रदेश के लिए लॉन्च हुआ है उसमें कितनी सारी संभावनाएं हैं वो सारी चीजें जो है आप तक पहुंच सके. और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जीएमडीआईसी श्री विनीत रजन सर को
कि सर के पास से जो है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी को जो है वो सारी जानकारी जो है स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की वो पहुंच लाइव स्क्रीन का करूँ? आप थोड़ा सा वहाँ पे हो जाइए क्योंकि लाइव ये दिखा इस पे देखते रहना अगर टी नरहारी करके कुछ टी बहुत ही बहनों में एक कार्यक्रम है कि हम लोग स्टार्टअप पे कार्यशाला कर रहे हैं जैसा के संरक्षण में एक स्टार्टअप सेंटर की स्थापना होगी इसमें
जिस पे काम चल रहा है, तो ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम है। जितने भी सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगी वो इनके माध्यम से मिलेगी। इसमें कार्यकारी प्रमुख होंगे, विशेषज्ञ होंगे, इसमें ये एक कमेटी रहेगी। ये कमेटी जितने भी बेनिफिट्स स्टार्टअप को मिलेंगे इस कमेटी के माध्यम से हमको काम आगे। ये जो स्टार्टअप जो सेंटर बनेगा, जैसे अभी मैंने बताया स्टेट लेवल पे, ये ये पूरी पूरी इस ये जो चल रही है कार्य योजना है, ये इनके माध्यम से संचालित होगी। ये स्टार्टअप सेंटर स्टेट में रहेगा। इनको देखिए राज्य में स्टार्टअप का मार्गदर्शन और सहायता जो भी आप लोग ये इसमें बेनिफिट्स देंगे, इसके बेनिफिट्स आपको इस स्टेट लेवल के सेक्टर के माध्यम से नेक्स्ट है। जितने भी विभागों से आप लोगों को किसी भी प्रकार की जरूरत होती है, कहीं भी आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो ये आपको ये स्टार्टअप सेक्टर बनेगा, ये आपको उसमें मदद करेगा। जो भी स्टार्टअप की शिकायतें होंगी तो आपको ये एक फोरम भी मिल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो ये स्टार्टअप सेंटर जो स्टेट में डेवलप बनेगा, उसकी बकायदा लिंक की वेबसाइट दी जाएगी आपको। आप अपनी शिकायतें इसमें आप अपने दर्ज कर सकते हैं। आपकी जो कमेटी बनी हुई है वो आपको सलाह देगी, आपको मदद करेगी। राज्य सरकार को आपके तरफ से कुछ भी यदि कोई अनुशंसा मिलती है, सलाह आप देते हैं, तो राज्य सरकार को ये इसके माध्यम से वो आपकी जो भी सलाहें हैं वो वहां तक जाएंगी और वो पॉलिसी में कोई भी यदि सुधार की जरूरत पड़ेगी तो ये सेंटर उस पर काम करेगा। आप लोगों को मार्केट की का इशू होगा, जैसे पिछली बार चर्चा हो रही थी कि मार्केट का क्या होगा, कैसे हम बढ़ाएंगे अपने प्रोडक्ट को, कैसे हम करेंगे, ये सारी चीजों में भी स्टार्टअप सेंटर आपकी मदद करेगा। मेंटरशिप की सहायता भी इनके माध्यम से होगी। अभी तक जो कर रहे हैं हम लोग केवल इंक्यूबेशन सेंटर ही इसमें आपकी
टाइम फटाफट एकदम इनके माध्यम से हो पाएंगे, इसमें भी आपको जोड़ेंगे। नेक्स्ट अधिकार समिति है, ये उसकी लिस्ट है। इसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष रहेंगे और इस प्रकार से बहुत सारे विभागों के अधिकारी जो है इसमें मेंबर्स हैं। और नेक्स्ट ये एक मूल्यांकन समिति है। ये उस समिति के इसमें भी जो है सभी विभाग जो संबंधित विभाग हैं उनके पीएस रहेंगे और ये भी एक समिति है जो काम करेगी। नेक्स्ट जो राज्य स्तरीय सहायता समिति है, ये वो समिति है जो आप लोगों का जो भी सुविधा मिली है गवर्नमेंट से, इस समिति के ये समिति पास करेगी। ये इनसे मिलना है। इसमें जो एमएसएमई के जो पीएस हैं वो इसमें अध्यक्ष हैं और ये समिति सब कुछ जितने भी सुविधाएं हैं इनके माध्यम से मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे स्टार्टअप्स तक जो है इतनी महत्वपूर्ण जो ये हमारी अभी स्टार्टअप पॉलिसी नई आई है, जिसमें बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं, जिसमें अप टू 1 CR का, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी स्टार्टअप एलिजिबल हो सकेंगे। ईएमडीज में बहुत सारा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा स्टार्टअप जो समितियां हैं वो भी यहाँ पर स्टार्टअप सेंटर्स भी बन रहे हैं, जो अपार्ट फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार जो प्रयास चल रहे हैं और इसी तरह से बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप लोग भी जिस तरह से अभी लगकर और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ को देख रहे हैं आगे, वो चीज आप भी कंटिन्यू रखें। अब हमारे साथ जो है बहुत जल्दी रिस्पेक्टिव पीएस एमएसएमई डिपार्टमेंट श्री टी नरहरि सर भी जुड़ने वाले हैं। सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें उन्हें भी सुनने का मौका मिलेगा। सर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने मेंशन किया, अगर कोई स्टार्टअप को सेबी रजिस्टर्ड फंड से फंडिंग मिलती है तो उसको 15% एक्स्ट्रा एमएसएमई डिपार्टमेंट देगा। अभी हमारे यहाँ एक स्टार्टअप को फंडिंग मिला है 25 लाख का ऑर्डर प्रोपोजल, तो और वो जिस एजेंसी से मिला है वो सेबी रजिस्टर्ड फंड है, तो विद दैट उसको 15% एक्स्ट्रा फंडिंग मिलेगा। एंड दूसरा जो उन्होंने बोला कि जितने भी बेनिफिट्स हैं डीपीआई की रजिस्टर्ड स्टार्टअप को है, लेकिन उसमें एक छोटा सा ग्लिच है। जबलपुर में 450 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है लेकिन सिर्फ 145 मान्यता प्राप्त है, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे रुकना नहीं है, रिकॉग्निशन लेना है। And on behalf of Jabalpur Smart City Incubation Center, I welcome respected T Narahari sir. Please everyone, please give a huge round of applause. और मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी को यहाँ तक लेकर जाने के लिए बहुत बड़ा सबका योगदान है और हम चाहेंगे कि सर के माध्यम से हमारे सभी स्टार्टअप्स को आज बहुत कुछ अच्छा जानने मिलेगा। We welcome you sir. सर का म्यूट है। भैया आवाज तेज करो। ये नहीं हो रही। Hello, sir, am I audible to you? Your voice is not audible.
देवांशी उनकी आवाज नहीं आ रही है, हमारी आवाज आ रही है। अग्रांशु, 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 अगर आप बोलो ना कि सर से रिक्वेस्ट हेलो सर, आई रिक्वेस्ट यू, आपका वॉइस सर हमें नहीं आ पा रहा है। Hello, hello. जी I'm सर, audible अब now? भी आ पा रहा है। यस सर, I'm audible now? यस सर, यस सर, यस। Okay, okay, right. So I'm very happy to know that Jabalpur is organizing this particular event today, uh, and Collector Ilayaraja has taken keen interest along with the local officers. So we are very happy to inform you that the MP Startup Policy 2022, which has been recently been approved by the cabinet of Madhya Pradesh, is going to be launched by Honorable Prime Minister on 13th of May. At this is going to be a virtual program, while the physical program will be in Indore. So I request all the startup or the startup community persons, startups, investors, incubators, mentors, all professionals associated with the startup community to be part of this particular event. I request you all to be physically be present in Indore. I have also requested the collector. I sent a letter that some of the um, good startups should be nominated and they should be present in this prestigious program. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh has been taking very keen interest and as guiding us in ensuring that the new startup policy, which is an amended one, has many such features which are going to be very, very helpful for the startup community. I would like to inform that why at this point of time, for the startup community, there is a positive atmosphere, positive environment that has been created. I would like to mention few things. First and foremost, we are going to have an MP Startup Center. An MP Startup Center is being established, which will have an executive head and few experts, and they are going to actually run the startup policy. The scheme which is part of the startup policy will be implemented under MSME department by the MP Startup Center. And the MP Startup Center will receive all applications online through a portal. And this is the second important feature which we are going to, Honorable Prime Minister is going to launch this portal. And anybody wanting to access the funds of Madhya Pradesh government for further strengthening their startups, access to the government funds will be done through this portal only. And we are very happy to announce that this portal is actually in tune with the Government of India Startup India portal. I mean to say, if you are a recognized startup of Jabalpur, let us say, you are already recognized by the Government of India Startup India portal. So once you can use the same username and password as that of the Startup India portal, and you can get into the portal of um, MP Startup portal. And once you enter
you mention your startup name and other details. Automatically, Startup India's details will be populated, and you can see all your details pertaining to your startup. So, Madhya Pradesh Startup Portal is integrated with Startup India portal of Government of India. So, and you can apply for all financial assistance through this portal. So, this is the second important feature that we have added to the MP startup policy. Earlier, these provisions were not there. Earlier, startups didn't know whom to apply, where to apply, whom to approach, was not there. Third important thing that we have done is all departments of Madhya Pradesh will be available on this particular portal. I mean to say, all departments of Madhya Pradesh, whoever is like urban administration department is running a startup center in the smart city. So all the incubation centers or startups of any department will be available on this particular portal. Apart from this, all mentors, all investors, incubators will also be available on this particular portal. So we are going to have the entire startup community on the portal. And if any startup guy wants to talk to a particular mentor or investor, you can do through this portal. So the MP Startup Center will help you in enabling to talk to any such person, whether he's a mentor or an investor or somebody who runs an incubation center. All those people are going to be available on MP Startup Portal. Now, the last important feature is going to be venture capital fund. The Madhya Pradesh Venture Capital Fund earlier was with finance department, has now come to MSME department. Now it is part of the MSME department. Now the venture capital, how to access to venture capital. So earlier I was talking about financial assistance. That financial assistance is a subsidy, concession. That is a subsidy. Earlier financial assistance that I was talking was concession or subsidy. Now I am talking about venture capital. So we are onboarding few alternate investment fund companies, AIFs. We call them AIFs. So alternate investment fund companies are being onboarded, and any startup company uh, who wants to be who wants venture capital from Government of Madhya Pradesh fund, the AIF will first evaluate you, and once the AIF evaluates, yes, this particular startup company is really good, they should be given certain amount of fund, let us say X amount of fund. So the X amount of fund that a particular startup company requires, 50% will be given by AIF and 50% will be given by MP Venture Capital Fund. So in this fashion, we are going to onboard alternate investment funds also, fund companies, AIFs, for ensuring that startups get venture capital from Madhya Pradesh government as well as from the outside AIFs. So these are huge developments that are happening as far as startup community is concerned, and this is a great opportunity, I would say. And I would want that Jabalpur and Jabalpur divisions, all districts, and the new startup community, the new startup guys who are having some innovation, some ideas, should access to all these activities. Apart from this, we are also making certain changes in the store purchase rules of Government of Madhya Pradesh, and startups will be able to participate in tenders with lot of relaxation. Lot of relaxation is being given for the procurement purposes for Madhya Pradesh startups. So this also is going to happen very soon.
So at this point of time, through this particular program, I'm very happy that the district administration Jabalpur has taken a very good initiative of organizing this event and making all the youngsters and the startup community aware about the Madhya Pradesh Startup Policy 2022. Apart from this, my request also to Ilayaraja is that all the polytechnics, engineering colleges, management colleges, higher education institutions should directly telecast the program of 13th May in some auditoriums and or huge halls where you can directly show the program that is happening from Indore and Honorable Prime Minister joining this virtually in this particular program, so that you can understand the quality of program and the kind of activities that are going to happen on this particular day. And also, apart from that, the message that Honorable Chief Minister and Honorable Prime Minister will be delivering to the startup community as a part of the new startup policy 2022. We are organizing a pitch up event on 9th of May. So those startups who are interested to meet certain investors can also join on 9th of May, 10 o'clock at Indore. There are more than 10 investors, angel investors, venture capitalists are coming to Indore on 9th of May. And this pitch up event will enable startups and investors to meet, to explain their case, and also to pitch up their case so that investors are interested in your company and they will invest, possibly invest in your startups. So this is another great opportunity. So this is the curtain raiser event we are organizing on 9th of May at Indore. So we look forward to organize many more events in future, and we also look forward to organize similar kind of events in Jabalpur very soon, so that startup communities get the opportunity to interact with uh, investors. See the owner or uh, the person who owns HCL, Mr. Chowdhury, who belongs to Jabalpur, who studied in Jabalpur Engineering College, is also joining this event on 13th of May in Indore. So he has a soft corner for Jabalpur and Jabalpur youngsters. So I would request that youngsters should speak to Mr. Chowdhury, and we will also make it happen if you're coming on 13th of May. You can talk to him, pitch up, and also try to see if he is able to invest in your companies. Thank you once again for this wonderful opportunity, and all the best to the organizers. Really, thank you so much, sir. I would request everyone to please give a huge round of applause. We have been always getting enormous support from sir in all of our events, and particularly we are really thankful for such a wonderful policy all around the country. People have been talking about policy, startup policy for Madhya Pradesh. So we are very thankful to you, sir. And now, taking the event forward, I also request Mr. Krishna Gudipadi from Startup India. I request you, sir, for your words of wisdom for our startups. Please, sir. Thank you so much. A very good evening to respected Secretary MSMEP Narhari sir, respected collector and all other government officials. My name is Krishna Godipudi. I look at the state engagements at Startup India. And we have been working very closely with Narhari sir and his team. And within no time, various initiatives have been rolled out within the state. So kudos to sir and his team, and in fact the entire startup ecosystem perhaps. Before talking about details about how important a policy is for the state, I would actually like to remind 20 years from now to let you know how important the Indian consumer base has been. अगर आप 20 साल पहले देखेंगे, अगर हम लोग एक छोटी सी दुकान पे जाते थे तो वहाँ पे हमको
₹12 की कोई चीज होती थी तो ₹15 देते थे, ₹3 के हमको छुट्टे नहीं मिलते थे, हम सबको या तो कैंडी देते थे या विक्स देते थे, हॉर्स देते थे, राइट। सिमिलरली अगर आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी बुलाना होता था तो हम रोड पे जाके हम अंगूठा दिखाते थे या हाथ खड़ा करते थे कि रुक जाओ टैक्सी या ऑटो। सिमिलरली अगर एक फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके हमको खाना खाना होता था तो हम वहाँ पे जाके पहले टेबल रिजर्व करते थे लॉन्ग लाइन में रुक के। तो ये सब जो चीजें हैं अगर अभी आप देखेंगे, ये सब चीजें 20 साल पहले हो रही थी, बट अगर अभी आप देखेंगे तो अगर हमको खाना खाना है फेवरेट रेस्टोरेंट से, हम या तो जोमेटो यूज करते हैं, यूज करते हैं। अगर हमको कोई पर्टिकुलर शॉप में फार्मेसी से कुछ मंगाना है तो हम सीधा फार्म इजी स्टार्टअप यूज करते हैं। अगर हमको एक टैक्सी बुक करनी है तो वी यूज ओला और उबर। तो अगर आप देख रहे हैं तो एंटायर कंज्यूमर बिहेवियर जो है अभी इट इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय स्टार्टअप्स, right? You name it, from the morning till the evening, you need any particular service, you are actually using a startup product. And this is the complete consumer behavior change that we have witnessed, and this change has been brought by startups. So this is how important startups are for the present generation, for the present situation, and how they are driving the entire economy as well. अगर आप सब लोग को पता ही होगा, we recently touched 100 unicorns, right? Which is not a small thing. And in fact, 2022 में सबसे ज़्यादा unicorns, the pace at which we are growing year by year, it is huge. Like 2020 में we had X, 21 में we had 2x, 3x of it. Now we are already halfway down, and we are almost having 5x of startups reaching the unicorn valuations, right? So this itself shows how important and how the entire ecosystem has been built to support startups and to whatever needs they want. Second thing which I want to talk about is the policy. आप सबको शायद ये चीज नहीं पता होगी, बट 2016 के पहले जब स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था 2016 में, उसके पहले सिर्फ 4 स्टेट्स के पास उनके खुद की स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी थी, ओनली 4 states. After 2016, when Startup India Action Plan was launched, right now we have total 30 states and UTs in India which have their own startup and innovation policy. Total 30 states in UT have their own startup and innovation policy, which itself shows how the entire each and every state is willing to support startup and entrepreneurs at every stage possible. For the rest 6 states and UTs, we are in active touch. A couple of policies are already drafted and it is yet to be approved. But that itself shows how much support the entire state governments are being providing, as well as the center, to support the startups. And this is all across all aspects, right from mentorship, right from funding, right from having the portal in terms of how easy the startups can actually access funding. So as Narari sir was also mentioning about API integration, so हमने DPIIT recognized startup or Startup India recognized startup, they can actually just log in, similar, very simple, like we do login with Facebook, login with Gmail. Similarly, website पे login with Startup India आता है, उससे any recognized DPIIT recognized startup can log in, and उनके जो पहले से भरे हुए details होते हैं, जैसे name, co-founder name, email address, ID, etc. There are few similar fields which are there in both the forms, so that gets auto populated. तो इसकी वजह से दो फायदे हो रहे हैं. एक तो स्टार्टअप को बार बार फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सेम ही चीज दोनों बार भरने की जरूरत नहीं होगी, तो स्टार्टअप का टाइम सेव होता है. सेकेंड थिंग, फॉर स्टेट ऑल्सो, हम जब करते हैं तो वी गो थ्रू अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, सेट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, एंड आफ्टर दैट ओनली वी गिव रिकग्निशन. सो इट बिकम्स इजी फॉर स्टेट टू not spend so much of time on verifying or doing the due diligence, except for the 2-3 questions that is related to the state. So this is what the API integration has been all about, which is making the life easy for startup recognition as well as startup registration. So these were some of the points I wanted to share, and very happy to know about the MP startup policy. And in fact, this would set a huge benchmark for the rest of the states as well in terms of the various incentives being offered. And congratulations to the team, as well as congratulations to the organizers of Jabalpur Incubation Center to actually conduct this event. And in fact, this itself is an inspiration for the rest of the incubation centers as well, that they should look at conducting these awareness sessions, because we at Startup India also have something called as SRF ranking, जिसको हम बोलते हैं स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क. उसमें ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ इंक्यूबेशन सेंटर्स आर सपोर्टिंग आर देयर आर points for startup policy awareness. So these things, these sessions should be spread across all other incubators, and everyone should let their startups know about the state incentives and policies so that they can avail the same. Thank you so much once again for giving me this opportunity. Thank you. Really, thank you so much, Mr. I request everyone to please give a round of applause.
we would definitely be looking forward for a lot of support from you. Our startups are really doing well out here in Jabalpur. We have a number of startups who are reaching out internationally. So we'll be definitely looking out for a lot of support from you. Thank you so much, Krishna, for joining us. Thank you really so much. And now the time has come. And before I really request our respected collector sir to please come forward and address our startup, एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूँगा कि before actually sir visited incubation center, इसके पहले भी कई लोग मुझसे मिले जिन्होंने बताया कि साहब ने कहा था कि आपने incubation center विजिट किया कि नहीं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार चाहूँगा सभी please give a huge round of applause because I have been very so much of interest and really we have been looking for a lot of support from his side also, and definitely our startups will be doing really great, sir. So now I request our respected sir to please for his words of wisdom, sir. Everyone, please give a huge round of applause. Good evening all. First of all, I congratulate the Smart City Incubation Center, CEO, and its organizers, everybody for conducting this event. I obviously, on behalf of the district administration, Sir Chalede, Nargari sir, and the startup person from Delhi, and Kavi, thanks. I say this is the direction given to the MSME department from Nargari sir. So we need to create a buzz even before launching startup policy for the Madhya Pradesh state government. So obviously it's going to get launched on 13th. So probably we would expect you also to participate in Indo launch event. Apart from that, as Nalini sir said, 9th, I think they are just going to have investor meet. Probably there are promising investors are there. Good startups. If you are really interested, I think probably exposure is everything. So I think we would request you to all go to an Indo and just meet investors, get to know other startups, get to know other people, so get yourself exposed to this ecosystem. That is another request. But Narendra sir said there are so many things changing. There are a lot of developments in the MSME sector, and before coming over here as a collector, before that, for a very short duration, I was director MSME and MD earlier. So I fully aware of the public procurement rules, but that's not everything. Public procurement only applies to government purchases, but still they are going to give a lot of relaxation to the startups. That's a good thing. Another good thing is they are going to set up a startup center, MP state startup center, like a incubation center here. They are going to have a startup portal where that will enable everybody to meet as a platform. That is again a good thing. We had startup policy in 2016, 2019. Uh, Probably much things did not happen as desired. But I think this is the right time again because whenever an environment matures, the ecosystem comes in. So this is a third attempt by the Madhya Pradesh state government. Probably we hope this will definitely bring a lot of success in the startup ecosystem. At least you can apply through portal. Before that, probably nothing was there. कहाँ आवेदन देना है, application देना है, किसको contact करना है. Lot of people would be misleading how to get the venture capital. But at least now they are going to have a venture capital. But again, it's a very innovative step of having a 50% 50% comes from government and 50 will come from alternate financial fund. Probably the real investors. So if your project, if the startup they find promising, and 50% will come from investors, 50% from MP state government. That's also good thing. अभी GMDMC ने startup policy के बारे में बता दिया. उसमें काफी सारा चीजें हैं 15% and probably 5,000. Well, lot of financial assistance. So वो भी आप लोग definitely advantage ले सकते हैं. But important thing is, of course, ये तो just to give a boost. But idea या finding investor ये सारे तो आप ही लोगों को करना है. आपको बीच से आना है. Again,
ऑफ कोर्स वी आर अ बिजनेसमैन, पर हम लोग लगातार देख रहे हैं व्हाट आवर आइडिया अच्छा हो सकता है, आपका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, आपके इन्वेस्टर भी अच्छे हो सकते हैं, बट स्टिल वन में फेल, राइट? वो एक चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ करके हमको करना है. Probably that again means startup exposure. That's why I told the whole team to visit other incubation centers and bring more and more people, more and more resources, whether it's a virtual or mentors, advisors, या यहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में. ये तो हम लोग वी आर इन अ वेरी नेसेंट स्टेज, बिगिनिंग स्टेज, बिकॉज स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट तो अभी आया है, so probably we would improve, we should improve. So उसके लिए क्या क्या करना है, I think the team should keep visiting the other incubation centers of the country. So मैंने लगातार बोल रहा था, even आपको भी suggestions हैं, generally we should invite suggestions of the continuously, है क्या feedback, यदि आप लोगों का फीडबैक हमको भी लेना चाहिए, तो मतलब if you have any feedback on how we can improve, क्या चीजें ला सकते हैं. एक चीज में लगातार देख रहा था, the other day I visited this place, काफी वैकेंसी थी सीट्स में, तो then I told we go for 24/7 and go for enough, जब slots भी लेना चाह रहा हूँ people, तो वो एक चीज मैंने सजेस्ट किया है. अदरवाइज तो आप लोगों को जो भी सजेशन है वो डेफिनेटली बता सकते हैं. इसके अलावा भी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी है, तो वो एक बार इन्हें गो थ्रू करें. एंड एक पीएमईजी भी है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन स्कीम, एंड देयर आर अदर स्कीम्स, पीएम प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, उसमें भी मार्जिनल सब्सिडी है. तो प्रोबेबली बिकॉज वी शुड कीप फाइंडिंग इन मनी एवरीवेयर, ओके, पैसा कहाँ से आएगा, दैट्स वन थिंग. ऑफ कोर्स विदाउट आइडिया ये है, मतलब बट ऐसे इकोसिस्टम में मेरे हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. जैसे आपका इनिशियल ईयर्स में नेगेटिव कैश फ्लो ना रहे, आपका कैश फ्लो बनी रहे, सो दैट यू कैन स्केल इट अप, यू कैन एक्सपैंड. ये सारी चीजें करने के लिए कुछ सजेशन है? हाँ बताइए. आवाज आ रही है क्या? बंद कर दो. बताइए. और ग्लोबल इश्यूज पर और फिलोसफी पर, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी पर काम कर रहा था. ठीक है, ठीक है. और इसमें नहीं ठीक है, मैं समझ गया. ठीक है, मैं अब सेपरेट अपॉइंटमेंट दूंगा, आपका अलग से बैठ करूँ. काफी फिलॉसफी का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, देयर इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, प्रोबब्ली नासा के रेफर करना पड़ेगा. ठीक है, और कोई सजेशन आप लोगों का है? और कोई सजेशन? जैसे कि अभी सर ने बताया, हमने एपीआईज प्रोवाइड किए हैं, सबसे ज़्यादा एपीआईज की जरूरत पड़ती है, बट ऐसी कुछ जानकारियाँ हमारे स्टार्टअप्स के बीच में नहीं हो पाती. हम उसका यूज़ कर रहे हैं. मैंने एपीआईज की जरूरत रही तो हमने वहाँ से एपीआईज हेतु आया गवर्नमेंट को. तो इस तरीके की जानकारी हमारे बीच में नहीं आ पाती, एपीआईज के लिए भी परेशान होते हैं. उसमें फ्री एपीआईज भी हो रही है हमारी, कुछ इस तरह की बुकलेट्स या कुछ ऐसा सोर्सेज की सारी जानकारी हो जाए कि इस तरीके की सुविधाएं हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स में या और चीज़ें पे. और इसके साथ ही दिल्ली आई ओपन सोर्स काफी हो गए ना, ओपन सोर्स में तो हो गए काफी सारा है, बट यूनिट अ कंपाइलेशन चाहिए. तो जस्ट नोट कर लें. इसके साथ ही हमने इंडिया अभी दिल्ली आईआईटी गए थे और वहाँ से हमने सारे इंक्यूबेशन से कनेक्टिविटी बनाई है और वहाँ से शेयर आइडिया हो रहे हैं. तो हमारे पास काफ़ी नॉलेज आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि साथ में रह के कम्युनिकेशन एक मीटिंग हुए थे कि हम शेयर कर सकें कि वहाँ ये चल रहा है और इस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट करें उनकी हेल्थ में. इस तरीके के प्रोग्राम एक दिन का रहना चाहिए. ठीक है, सिमिलर प्रोजेक्ट्स के लिए. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट्स करने के पहले अगर सिमिलर प्रोजेक्ट्स का मतलब दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर में तो नहीं है, तो दूसरे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रही है सिमिलर प्रोजेक्ट्स में, सिमिलर नेचर पे, ये डेफिनेटली ना आपकी नॉलेज में ना होना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली इनिशियल फेजेस में हम क्या सोचते हैं कि मतलब है ना व्हाट वी आर थिंकिंग इज यूनिक, वेदर आई डोंट नो मार्केटेबल है या नहीं, कंज्यूमर्स है ना पसंद करेंगे नहीं, दैट इज ना वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, यहाँ की इंक्यूबेशन सेंटर का या कुछ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आप लोगों को फैसिलिटीज इंप्रूव करना है? Sir, I have been part of online communities from since 2 years after lockdown. So I have seen there is a very global connectivity. So currently my team is based out of Mumbai University and सारे बच्चे अलग-अलग जगह से belong करते हैं, मुंबई से काम कर रहे हैं वर्चुअली। But there is gap here. अगर हम एक ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी जितनी भी स्किल्स हैं ना, हम बहुत अच्छी स्लाइड्स में क्रिएटिव वे में यहाँ की यूनिवर्सिटीज में जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं या यहाँ के जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम आपको बच्चों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है। तो इट इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड मार्केटिंग and the kind of Instagram promotions and all that is very good, but we can promote it in colleges first, in school first. So लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे and बच्चे सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, and these young birds are seriously people. They are way smarter than us and वो पूरी कंपनी संभालने वाले हैं। Obviously, अभी तो kids have started in our companies. अभी कोई भी स्कूल में जाए तो मतलब है ना, at least you could see कि ना किसी कंपनी ने स्टार्ट किया टाइप का काफी सारे मतलब every year है ना we are outdated every 1 year, so of course हम तो publicity service में आ गए, we also feel outdated कि मतलब unless otherwise you upgrade yourself, update yourself, मतलब you will feel you know ये obviously you have to match with the end of the society है, especially youngsters school going students हैं, उनका मैच करना ये ना मतलब हमारे लिए डिफिकल्ट है। Probably we are in a far beginning, but again ठीक है, गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस है कि because there are so many other part of the society है which lack access, so probably bridging the gap is very important। ठीक है, तो आप लोग probably universities colleges already है ना अपर स्कोप टाइप का, तो हब होना चाहिए आपका, सारे important यूनिवर्सिटी के ना स्कोप होना चाहिए दोनों, वहाँ एक आपका स्कोप है, यहाँ लोकल लेवल पे भी इस इंक्यूबेशन सेंटर्स है, हम कितने यूनिवर्सिटीज को है ना हम लोग टच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टच कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट। जी सर, actually sir we have our tie up with 35 colleges and university, all the universities of Jabalpur, और we have been rigorously doing outreach program, boot camps with in the colleges, और ये सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें आज today at the stage we have the highest number of incubators in Madhya Pradesh, और हमें लगभग हर कॉलेज से 2 इंक्यूबेटर मिले हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी चीज है, एंड वी वुड डेफिनेटली उनका सजेशन ये है परमानेंट, जस्ट व्हेन यू हैव कंडक्ट एन आउटरीच प्रोग्राम वो है स्लाइड्स पे मतलब अट्रैक्टिव है ना प्रेजेंटेशंस पे मतलब परमानेंटली एक रिसोर्स ना उनका एक्सेस हो इसके बारे में जानने के लिए, लाइक अ गूगल सर्च है ना, मतलब है ना आपका सारी चीजें ना मतलब है ना पहले से हो जाएगा, पूरा एक्सेसिबल हो जाएगा, इंफॉर्मेशन गैदर करने में भी उनका टाइम ना लगे, इंफॉर्मेशन वो तो एजुकेशन की थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, बट उनको इंफॉर्मेशन गैदर करने में प्रोसेस एसओपीज जानने में भी ना मतलब है ना ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आई थिंक दे शुड इन्वेस्ट मच टाइम इन दैट। और कोई और अगर किसी का कुछ सजेशन, एनीबॉडी कम अप विद एनी सजेशन? यहाँ कुछ इश्यूज हैं, फीडबैक अभी आपने देखा होगा एक इनोवेशन चैलेंज है वो सोशल सेक्टर के लिए है, राइट, उसमें डिपार्टमेंट से कुछ चैलेंजेस थ्रो किए बट जस्ट वेरी वेरी वेग इन नेचर, बड़े हैं, ठीक है, सो इनोवेशन चैलेंज भी ले सकते हैं, बट आई डोंट नो मतलब हाउ मच वुड बी आपका हाउ प्रॉफिटेबल आई डोंट नो, बट सी सोशल सेक्टर में ना अभी भी ना बहुत कम काम हो रहा है, but India is such a huge country, uplifting you know poverty से बाहर आने में ना बहुत ज़्यादा solution की जरूरत है, but उसमें ना बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, the way the administration sees है, मतलब बहुत सारे चीजें हम लोग देख रहे हैं schemes implementation में, still we are not seeing ना much innovation ना something, वो तो हम लोग सरकारी तरीके से उन लोग ना करा रहे हैं, आपको काफी इम्प्रूवमेंट है, पहले से कंपेयर में डिजिटाइजेशन हो रही है, वन ऑफ द एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा अभी, जैसे अभी ना कितने भी रूरल एरियाज है, आप लोगों ने स्वामित्व योजना के बारे में किसी को जानते हैं? स्वामित्व, ठीक है, अभी कितने भी ना रूरल एरियाज है
वहाँ है ना मतलब कितने भी लोग हैं ना हाउसेस बने हुए हैं, दे डोंट हैव अ टाइटल अभी, फिलहाल उनके पास कोई टाइटल नहीं है, मोस्टली दे लैक पेपर्स आल्सो। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, इनोवेटिव है ना स्टेप लाया है कि मतलब वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू पेपर, दैट इज अ टाइटल। टाइटल मींस वो परमानेंट लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट है। तो जब होगा मतलब इवन यू कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक्स, रिवोल्यूशनरी स्टेप है। ऐसे नहीं कि सारे लैंड मेरा गवर्नमेंट का है, ऑफ कोर्स आप रूरल एरिया से जाके देखेंगे, हमने मकान बना हुआ है, कुछ उनका विस्तार एरिया है, बट अभी ड्रोन फ्लाई हो रही है, वी आर जस्ट मैपिंग ईच एंड एवरी हाउस, उसके बाद ग्राउंड ट्रूथिंग कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया के है ना सैटेलाइट मैप के माध्यम से फिर हम लोग है ना मैप्स जनरेट कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट है ना लास्ट क्लास में आके हम लोग एक परमानेंट है ना टाइटल है ना उनको जनरेट कर रहे हैं। आई थिंक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ना सारे विलेजेस में है ना ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो गया, ग्राउंड ट्रूथिंग का काम चल रहा है। इट्स अ वेरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, बिकॉज आपका रेवेन्यू कोड देखे काफी सारा लोगों का टाइम है रेवेन्यू कोर्ट से जाना आना। आई थिंक जनरली हमारी लैंड डिस्प्यूट्स है ना इतने ज्यादा है हमारे इंडिया में, जैसे कि ये सारे लैंड डिस्प्यूट को आप सॉल्व कर दे तो जीडीपी है ना 10% है ना उड़ जाएगा टाइप का, मतलब उतना टाइम है ना लोग है ना इन्वेस्ट करते हैं लैंड डिस्प्यूट्स पोजीशन कब्जा ये सारे चीजों में। तो दैट इज अनदर थिंग, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। बट इसी प्रकार का सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स में भी आप लोग है ना डेफिनेटली काम कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है, उसको ऊपर आप लोग है ना काम कर सकते हैं। एजुकेशन ऑब्वियसली वो देख ही रहे आपका होम गुरु है या इनोवेटर है, वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है कि वर्चुअल रियलिटी में दे आर जस्ट गोइंग टू है ना create है ना कंटेंट चैप्टर वाइज है ना, डेफिनेटली दैट्स अ probably future is that virtual reality tourism sector has lot of scope, but अभी भी है ना unexplored है ना places है, एमपी भी है ना अभी भी है ना mostly unexplored है, because foreign tourists जब भी आते हैं उनका golden triangle है दिल्ली, आगरा, जयपुर, second time they will go to Kerala, ये तो it is untouched, so we have a potential, तो उसका ऐप बना सकते हैं, मतलब काफी सारा स्कोप है। आई थिंक दिस ऑल अगेन सोशल सेक्टर्स है, उसमें भी आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अगेन I'll be available, we are very accessible district administration, जब भी कोई भी चीज है डेफिनेटली ना यू कैन ना गेट बैक टू अस, सीओ डीटीपी है, हम लोग लगातार आई विल बी कीप कमिंग टू द इंक्यूबेशन सेंटर एंड इफ यू आर सो हेसिटेंट टू ना स्पीक हियर, but still you can give us enough suggestions, even if you don't want to reveal your name, anonymous suggestions are also welcome, ठीक है, इतना shy भी नहीं होना है, but let us do one thing, you just fix the milestones, यहाँ से आना चाहिए, at least कुछ projects है ना एमपी स्टार्टअप पॉलिसी में ना सेलेक्ट होना चाहिए। कितने लोग जाएंगे, इंदौर जाएंगे यहाँ से 30 को, बहुत ठीक है। कितने लोग 9th को जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को मीट करने के लिए? 4-5 लोग हैं, तो इन्वेस्टर्स को चलो घूमने तो जाओ, मतलब एटलीस्ट इंदौर जाके ना एटलीस्ट क्लीन तो है सिटी, तो जबलपुर तो बहुत ही गंदा है, ठीक है, उतना तो देख के आओ। कितने को इंदौर तो सभी लोग गए, ऑब्वियसली गए होंगे, ठीक है, चलो फिर भी एक बार और जाओ, ठीक है, घूम के फिर जस्ट जाके 10 मिनट्स है ना उसका इन्वेस्टर्स का प्लेस देख के जगह देख के फोटो खींच के आ जाना, बट जस्ट गो, मतलब है ना मैं बार-बार बोलूंगा एक्सपोजर एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सारे ठीक है, तो अंदर से अदरवाइज आपको रियलिटी भी है ना समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, रेदर देन सक्सेस स्टोरीज है ना फेलियर स्टोरीज है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गो 9th भी जाइए, 13th जाइए, उसका लिस्ट बना दें सारे लोगों का, एंड अगेन जैसे सर ने कहा है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज अदर इंक्यूबेशन सेंटर्स एग्रीकल्चर कॉलेज और ट्रिपल आईटी, सभी कॉलेजेस में एक बार है ना यहाँ पे सर्कुलर है ना जारी हो जाए तो गो होगा। थैंक यू। We are really so much thankful to sir and really our startups are feeling so motivated. और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीईओ जबलपुर स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत मैम को कि वो प्लीज आए और हम सभी जो हमारे स्टार्टअप्स को इतना अच्छा सपोर्ट दे पा रहे हैं, जो
आज जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं डेफिनेटली बहुत सपोर्ट है हमें हमेशा भारत की साइड से। प्लीज एवरीवन प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड आई रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड थैंक यू यहाँ हमें सबसे पहले संबोधित करने वाले जो सेक्रेटरी सर हैं एमएसएमई आदरणीय नरहरी सर, हमारे कलेक्टर सर आदरणीय यादव सर, और यहाँ हमारी इंक्यूबेशन की टीम और हमारे सभी एनर्जेटिक स्टार्टअप। थैंक्स बोलने के पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हम एवरी सेकंड एंड फोर्थ थर्सडे यहाँ पर 10:30 पर मैं आती हूँ और हम मीटिंग करते हैं। आप में से कई स्टार्टअप्स अपने आइडियाज हमको शेयर भी करते हैं, उनको 2-2 या 3-3 को हम टेकअप करते हैं। पर सर ने जैसे आज बोला फीडबैक के लिए, तो मैं जब वहाँ यहाँ रहती हूँ तो आप कोई भी फीडबैक सीधे मेरे से आके मिल सकते हैं। यदि यहाँ हेजिटेशन है आपको तो आप स्मार्ट सिटी में आके मिल सकते हैं। मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यदि आप बाकी किसी से अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते। पर हम डेफिनेटली अपनी सारी सुविधाओं में सुधार करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से अच्छा माहौल मिले। और मैं चाहूंगी कि जबलपुर के स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में नहीं देश में भी आगे आए। निश्चित रूप से हमारे एग्रो में जो स्टार्टअप्स हैं सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी क्षेत्र में भी जैसे एक बड़ी ऐप बनाया है और ऐसे कई ऐप्स हैं, सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर सबके अपने काम जो है अपने क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो और सर 2-3 चीजें और बताना चाहूंगी कि जैसे हम फ्राइडे फाउंडर्स का एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका लाभ आप लोग ले रहे होंगे, उसमें हम और भी सुधार कर सकते हैं। जल्दी हम वेडनेसडे को एक उद्योगिनी करके प्रोग्राम दिया शुरू करने वाले हैं, जो स्पेशली जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आएंगी और अपने अनुभव आपसे साझा करेंगी कि कैसे उन्होंने अपने घर की स्थिति में भी रहते हुए और कैसे अपने जो बिजनेस को आगे बढ़ाया है, कैसे अपने आइडियाज को आगे लाया है, कैसे वो सफल हुई है। ये भी हम आपसे जल्दी अब नेक्स्ट वीक से प्रोग्राम हम शेयर करने वाले हैं। सर हम अभी एक लोकल लेवल पे इन्वेस्टर मीट करने वाले हैं, फिर देन हम पूरे इंडिया लेवल पे वो मीट करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपने छोटा छोटा 2 मिनट का एक प्रेजेंटेशन बना के रखें ताकि हम पहले अपने एंजल इन्वेस्टर जो है वो यहीं से जोड़ें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सारे ऑनरेबल सर नरहरी सर का, स्टार्टअप इंडिया से जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हमारे ऑनरेबल कलेक्टर सर और सभी मेरे स्टार्टअप्स, आप लोग इस प्रोग्राम को आए और उसको सफल बनाया। थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं, सेल्फिश होते हुए बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ चीजें हैं, वी कैन आल्सो बी इन्वेस्टर बट स्टार्टअप लेवल पे हो सकता है। आपका कुछ प्रोजेक्ट कुछ और है बट उसका सही स्मॉल प्रोजेक्ट्स हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम के साथ भी है ना, कुछ भी आइडियाज शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा होम लोन लेता, उन्होंने क्लियरली बोले 1 लाख तो वर्चुअल रियलिटी हम इन्वेस्ट करेंगे। इट्स नॉट अ बिग थिंग कि मतलब 15 लाख या 20 लाख है ना, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हमारी स्टार्टअप का यहाँ से हम लोग के ना एक प्रोजेक्ट के माध्यम से वो तो बहुत सारे लोग हैं डोनेट करने के लिए ना रेडी हैं। जबलपुर में बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी है ना, जैसे नर्मदा रिवर है, ठीक है, पोल्यूशन है, मतलब उसके लेकर है ना कुछ चीजें क्रिएटिवली कैसे किया जा सकता है। एंड देन हमारी हम लोग देख रहे हैं कि अननोन पीपल काफी लोग हैं रेट बसेरा में ना, हम लोग ना देख रहे हैं उसको लेकर मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं। क्लीनलीनेस जैसे मैंने पहले भी कहा गया, उसके लेके क्या कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग थिंग कि मतलब ना उसके लेकर आप लोग कुछ मैंने देखा भी है, एक स्टार्टअप है ना देखा है naukri.com टाइप का, ठीक है, एंड हाँ आपका है, ठीक है। तो उसमें है और एवरग्रीन सेक्टर तो एंटरटेनमेंट फूड ये तो एवरग्रीन सेक्टर है ही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में काफी हो रही है, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिल करके कुछ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को है ना कस्टमर तक ना कैसे पहुंचाना है, वो एक बहुत अच्छे से आ सकता है। उसमें हम सारे लोग मिलकर काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये हम लोग कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपको ला सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ फार्मर्स को करने का। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मटर है ही है, राइट, ग्रीन पी, उसका जीआई ऑलरेडी ले रखे हैं हम लोग, ठीक है। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अभी कुछ इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, उसको फेमस कैसे आउट कैसे किया जा सकता है। मतलब छोटे छोटे आइडियाज की, मतलब आपका है ना बिग आइडियाज के साथ साथ मतलब आपका ऐसे कोई भी आइडिया है प्लीज है ना शेयर करें। एंड दैट इज
attractive, scalable at the limit. हम ये नहीं बोल रहे कि immediately ना पूरा scaling होना चाहिए, मतलब even एक pilot में भी ना हम लोग ना कुछ काम कर सकते हैं small level पे, definitely it will give you definitely popularity और administration को भी ये लगेगा कि it will motivate lot of people to come. कोई भी project immediately ऐसे में ना mature नहीं होता, magic wand भी नहीं है, but at least we would definitely support you for the city का issue, city specific issue, Jabalpur specific issue. Okay, you are most welcome.